चैप्टर 18 में है चार्ज। चैप्टर 18 में है चार्ज। सेक्शन है 234 से लेकर 247, 234 से लेकर 247। द प्रोविजन रिलेटिंग टू चार्ज अंडर BNSS के चैप्टर 18। पहले ये CRPC में चैप्टर 17 था, अब हो गया 18। सेक्शन 234 से 247, विच फॉर्म मेंशन्ड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ BNSS इज रिलेटेड विद चार्ज। यानी फॉर्म 33 जो है ये चार्ज का फॉर्म है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द चार्ज व्हेन यू विल मेक ए चार्ज, दिस विल बी द फॉर्मेट। फॉर्म 33, साइज फॉर्मुलेशन ऑफ ए स्पेसिफिक एक्विजिशन इज कॉल्ड चार्ज। प्रिसाइज फॉर्मुलेशन होता है स्पेसिफिक एक्विजिशन का, दैट इज कॉल्ड चार्ज। हु कैन फ्रेम ए चार्ज अकॉर्डिंग टू BNSS? कोर्ट। कोर्ट फ्रेम चार्ज करती है according to the BNSS. Which section of the BNSS provides for contents of charge? चार्ज में क्या कंटेंट होगा, ये 234 सेक्शन 234 में लिखा रहता है कि क्या चार्ज में कंटेंट होगा। विच इज नॉट ए कंटेंट ऑफ चार्ज? चार्ज का कौन सा कंटेंट नहीं होता है? तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड जो है इसमें नहीं लिखा जाता है। अंडर BNSS ए चार्ज शैल बी रिटन इन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। चार्ज जो है language of the court. Under BNSS, charge should be written in the language of the court. Which section of the BNSS particulars as time, place और person? टाइम, प्लेस और पर्सन कौन सा सेक्शन में रहता है कि मेंशन करना है? तो 235। A is accused of beating B. A is accused of cheating B at a given time and place. Choose the correct answer. The charge need not set out the manner in which A cheated B. The charge must set out the manner in which A cheated B. With reference to charge, which of the following statements are correct? Every charge under BNSS states the offences with which the accused may be charged. If in the course of same transaction more offences than one committed by the same person, he can be charged at one trial, both 1 and 2. Every charge under the BNSS states the offences with which accused may be charged. हर एक चार्ज के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा और एक ही ट्रायल में अगर ये 1 से ज्यादा ऑफेंस किया तो एक ही चार्ज में वो किया जा सकता है। एरर ओमिशन है तो विच सेक्शन ऑफ द BNSS प्रोवाइड फॉर इफेक्ट ऑफ एरर्स इन स्टैंडिंग चार्ज। अगर कोई चार्ज में गलती हो जाती है तो ये दिखाता है सेक्शन 238। सेक्शन 238, एरर और ओमिशन इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज B is a material only if it is has occasioned failure of justice. एरर और ओमिशन इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो है, अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है तभी हम उसको ओमिट करेंगे या चेंज करेंगे, अदरवाइज द चार्ज इज ओके। तीसरा क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ एरर इन स्टेटिंग द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर्स इन द चार्ज शैल बी regarded material under which of the following circumstances? When the accused is misled by the error. Under which section of the BNSS addition or alteration of charge can be provided? Section 239, alteration या addition of the charge. Under section 239 of the BNSS, the court has the power to add to and alter the charge. Add या alter कर सकते हैं, प्लस या चेंज कर सकते हैं 239 सेक्शन के तहत। The court may alter the charge before judgment is pronounced. जजमेंट प्रोनाउंस्ड होने से चार्ज को अल्टर किया जा सकता है। Which section provides for recall of witness when the charge is altered? चार्ज जब चेंज करेंगे तो विटनेस को रिकॉल करेंगे, सेक्शन 240 में दिया हुआ है। अगर हम बदलते हैं तो विटनेस को रिकॉल करके फिर से गवाही लिया जाएगा। Whenever a charge is altered or added to by the court after the trial is commenced, the prosecution has right to recall
or re-summon any witness who has already been examined. प्रोसिक्यूशन जो है वो बुलाएगा या रिकॉल करेगा किसी भी विटनेस, एनी डिफेक्ट इन द चार्ज can be cured by amending it with direction to retrial if such amendment is causing prejudice to the accused. When shall the prosecutor and the accused be allowed to recall the witness? Prosecutor and accused जो है be allowed to recall the witness. Witness को recall कब कर सकते हैं? When a charge is altered or added. चार्ज जब बदला जाए या alter चेंज किया जाए तब कर सकते हैं. Joinder of charges. For every distinct offense of which any person is accused, there shall be separate charge which will be tried separately. Section 241. He is accused of theft on one occasion and of causing grievous hurt on another occasions. By applying section 241 of the BA, which one of the following statement is correct? A must be separately charged and separately tried for the theft and causing grievous hurt. तीसरा, for every distinct offence of which any person is accused, there shall be a separate charge. Where is the exception to this rule in BNSS? सेक्शन 242, 243 और 244, 246. 242 से 46 these are the exception that there shall be a separate charge. Which section of the BNSS provides that offence of same kind within a year may be charged together? Section 242. Offence of same kind can be charged together. Under section 242 of the BNSS, offence of same kind means when they are punishable with the same amount of punishment under the same section of the BNS or any other special law. Offence of same kind committed by a person accused of more than one offence within the space of 12 months, whether in respect of the same person or not, may be charged with and tried at one trial under BNSS for how many offences? B. 5. अगर एक ही साल के अंदर में 5 अलग अलग ऑफेंस हुए तो उसको एक ही साथ कंबाइन करके एक साथ चार्ज करके और ट्रायल कर सकते हैं. मैक्सिमम जो है 5 है. व्हेन ए पर्सन इज अक्यूज ऑफ मोर देन वन ऑफेंस, more offenses than one dash committed within the space of 12 months, he may be charged with and tried at one trial for any number of them not exceeding 5. मैक्सिमम 5 कर सकते हैं. और सिमिलर टाइप का ऑफेंस हो, सेम काइंड का ऑफेंस हो तब कर सकते हैं. विच सेक्शन ऑफ द BNSS provides that if a series of facts are so connected together as to form the same transaction, more than one offense is committed by the same person, he shall be charged with every such offense and tried at one trial for all the offences. Section 243. If a series of acts are so connected together as to form the same transaction and more than one offense is committed by same person, he shall be charged with every such offense and tried at one trial for the all offences. He is accused of an act which may amount to theft or receiving a stolen property or criminal breach of trust. He is only charged with theft. It happens that he committed the offense of criminal breach of trust. Choose the correct statement from following. A, he may be convicted of criminal breach of trust, though he was not charged with such offense. Which section of the BNSS provides the procedure for situation where it is doubtful which offense has been committed? Section 244. According to section 245 of the BNSS, if a person is charged with an offense and facts are proved which reduce it to a minor offense, then he may be convicted for the minor offense which has been proved though not charged. Joint trial of several persons is permissible under सेक्शन 246 ऑफ द BNSS. ज्वाइंट ट्रायल जो हो सकता है इज परमिसिबल अंडर सेक्शन 246 ऑफ द BNSS. 246 ऑफ द BNSS ज्वाइंट ट्रायल. व्हाट पर्सन में बी चार्ज ज्वाइंटली? कहा जाएगा सी, ऑल ऑफ दिस.
सभी प्रकार के पर्सन जो है, persons accused of the same offense committed in the course of same transaction, persons accused of an offense of person accused of abatement or attempt or to commit such offense, person accused of more than one offense of the same kind, and the person accused of abatement of or attempt to commit such offense, persons accused of more than one offense of the same kind within the meaning of section 242 committed by them jointly within a period of 12 months. Which section, which of the following persons cannot be charged together? Person accused of the same offence of committed in the course of different transaction cannot be charged together. Which section of the BNSS provides for withdrawal of remaining charges? Withdrawal of the charges करना है on conviction on one of the several charges. कि 247 में अगर वो किसी चार्ज में कन्विक्ट हो गया तो बाकी सब चार्जेस को विड्रॉ कर लेंगे. थैंक यू.